Hello students, welcome back welcome back to the power system class. In previous class we have discussed about direct drive wind power plant. We have discussed about classification of wind power generation. In that we have discussed about constant speed generators like squirrel cage induction generator and wound rotor induction generator, which we call SCIG and WRIG in acronyms. And today we are going to discuss about variable speed drive generator units such as DFIG, WRSG and PMSG. Okay, so firstly we will discuss about DFIG or Doubly Fed Induction Generator. So without further ado, let's cut to the chase. Here you can see the picture of Doubly Fed Induction Generator. Okay, so firstly the generator is fed from two sources. The stator and rotor of the generator are separate are fed to the separate power sources, and that is why it is called doubly fed induction generator. As you can see, just like previous models, the blades are connected to the gearbox. We have gearbox attached in this type of generators, in this type of models. Then gearbox is connected with the generator. Now you might be able to see two rings around the generator. Let me highlight it for you. So you'll be able to see two types of generator. The outer ring, this outer ring represents stator, so I will write S for that. And this inner ring, the inner ring, it represents rotor, so we will write R for it. Okay, there is less space around here, so यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R. इनर रिंग जो है वो रोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नाउ ये जो स्टेटर जो है वो कनेक्ट किया गया है सीधा थ्री फेज ग्रिड से, पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है. सो उसको वहाँ से फीड किया जाता है स्टेटर को. ओके, और जो रोटर जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू द दिस कंट्रोल यूनिट. ठीक है, रोटर वाइंडिंग को यहाँ पे कन्वर्टर यूनिट से सप्लाई मिलता है. ठीक है, वाया स्लिप रिंग्स, और उसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पे. ओके, कंट्रोलर यूनिट या कन्वर्टर यूनिट जो है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ एक AC टू DC कन्वर्टर, बीच में एक कैपेसिटर बैंक और एक AC टू DC कन्वर्टर जो आगे चल के सीधा ग्रिड से कनेक्ट हो रहा है. ओके, नाउ DFIG का जो सिस्टम है वो ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है, वो ज़्यादा डायनेमिक स्लिप कंट्रोल ऑफ़र करता है. ठीक है, और जो उसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑप्टिमम पावर ऑब्टेन हो पाता है. ठीक है, ना उसके बाद तो यहाँ पे इट दे हैव रिटन व्हाट आई हैव सेड अबाउट रोटर एंड स्टेटर्स. तो जो रोटर को जो है कनेक्ट किया जाता है, रोटर वाइंडिंग को किससे कनेक्ट किया जाता है, कन्वर्टर से वाया स्लिप रिंग. ओके, एंड इट कंट्रोल्स रोटर एंड ग्रिड करंट. ठीक है, और उसके बाद जो स्टेटर है जिसके वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द थ्री फेज ग्रिड. ओके, और ये जो कन्वर्टर है, I will highlight the converter part for you. Let's highlight it in green. So this part is called converter. It has nothing but a rectifier and inverter alongside with a DC link capacitor. This part is called converter. Or what will be its task? If you have attended previous lectures, you will know that it is used for
पावर पावर फैक्टर कंपनसेशन. ओके, सो जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो का जो कंट्रोल है ग्रिड में भी, इट इज डन बाय दिस. ऑलराइट, नाउ दिस सिस्टम, जो पावर कन्वर्टर जो होता है, पावर कन्वर्टर इंटरफेस, वो रोटर फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है. एंड बाय कंट्रोलिंग द रोटर फ्रीक्वेंसी वो क्या करता है, जो स्पीड जो है उसको वेरी कर पाता है, मतलब वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से my system will be able to absorb maximum wind energy. Okay, now जो स्टेटर जो है वो डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट किया गया है, जो आप देख सकते हैं. ठीक है, और जो रोटर वाइंडिंग है वो इसको बैक टू बैक पावर कन्वर्टर भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट किया गया है. ओके, नाउ पावर कन्वर्टर एंड कंट्रोलर गवर्न द ऑपरेशन ऑफ DFIG. जो DFIG का जो पूरा ऑपरेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आपका पावर कंट्रोलर पार्ट है, इट प्लेज मेजर पार्ट, बिकॉज एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर सप्लाई ये करता है, पावर कंपनसेशन जो है वो पूरा ये करता है. ओके, वो साथ साथ में जनरेटर से इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी कर सकता है और उस अब्जॉर्ब भी कर सकता है. ठीक है, मतलब पावर कन्वर्टर अब्सॉर्ब भी कर सकता है और जनरेट भी कर सकता है इलेक्ट्रिक पावर एज पर रिक्वायरमेंट. राइट, और साथ साथ में इन एनी केस ऑफ गस्ट और विंड अटैक्स, द विंड टर्बाइन अटैक ऑन द विंड टर्बाइन, इट विल ट्राई टू स्पीड अप, और उसकी वजह से इट कैन सस्टेन मेजर डैमेज. बट what will happen, generator will get locked, और उसकी वजह से स्पीड जो है पावर ग्रिड की वो सेफ्टी ऑपरेशन में चली जाएगी. ओके, नाउ डिस्कसिंग एडवांटेजेस ऑफ DFIG. सो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड फ्यू सेकंड्स अगो कि जो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन है वो मुझे मिल जाता है. ठीक है, सो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो कम होता है, और जब वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन मिलेगा तो आपको वो कंपैटिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा विंड के वेरिएबल नेचर के साथ. ओके, इसमें टरबाइन पे स्ट्रेस बहुत कम पड़ता है, और साथ साथ में रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए हमको कोई अलग से कैपेसिटर बैंक पूरी नहीं लगानी पड़ती, हमारा पावर कंट्रोलर ही ये काम कर देता है हमारे लिए. ठीक है, और बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो इट इज़ लो कॉस्ट एंड इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड कन्वर्टर यूनिट पावर फैक्टर भी ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है. ठीक है, डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर जो है दैट इज़ मोस्ट यूज्ड जनरेटर अमॉन्ग विंड पावर प्लांट्स out of all the generators you have studied so far. Okay, so it has more advantages and very less disadvantages. Now discussing disadvantages, तो मेजर एक डिसएडवांटेज क्या है कि पावर कन्वर्टर जो है उसकी ज़रूरत होती है इसमें. हाँ, बिकॉज यू विल इधर नीड कैपेसिटर बैंक और यू विल नीड पावर कन्वर्टर यूनिट. So we are having power converter, right? Or because of that power converter unit, what will happen that you have added 2 extra units. You can see here, right? एक AC to DC converter लगा दिया, DC to AC converter लगा दिया. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से दो जो स्टेज ऐड हुए उनके ऐड होने की वजह से there will be some losses. ओके, ये जो कोई भी स्टेज है, ये जो कोई भी कंट्रोलर्स है, कन्वर्टर्स है, जो AC to DC कन्वर्टर्स है,
तो वो हमें कभी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगे. सो इफ़ यू गिव देम 100 voltages, it is possible they might return 93 or 96, but they may not be able to return 100 all. So उसकी वजह से जो losses आते हैं that will be there. And then temperature rise limits and bearing vibrations जो हो गए ओवर स्पीडिंग कंडीशंस में. सो इस ओवर स्पीडिंग कंडीशंस को कंसीडर करके पूरा सिस्टम आपको डिज़ाइन करना रहता है, विच इज़ अगेन कॉम्प्लेक्स जॉब. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टॉवर्ड्स wound rotor synchronous generator. Here you can see image of wound rotor synchronous generator system. ठीक है, यहाँ पे भी जस्ट लाइक डब्ल्यू फेड, यहाँ पे भी आपको पूरा एक यूनिट मिल जाएगा, पावर कंट्रोल यूनिट. इसमें AC DC रेक्टिफायर है, DC लिंक है, और साथ ही में एक इन्वर्टर जोड़ दिया गया है. ठीक है, और पावर रेक्टिफायर जो है उसको स्टेटर वाइंडिंग और जो ट्रांसफार्मर है जो सीधा ग्रिड पे कनेक्टेड होता है उसके बीच में आपके पूरे कंट्रोल यूनिट को ही रखा गया है. ओके, नाउ जो वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उसके 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 लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा हो जाता है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है उसका स्टेटर और रोटर, द वे दे जनरेट EMF और इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो स्टेटर जो होता है उसमें 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग रखाई होती है. ठीक है, एंड दे आर जो वाइंडिंग जो है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली या फिर 120 डिग्री फिजिकली सेपरेट करके लगाई गई होती है. ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल डिग्रीज आर इक्वल एंड मैकेनिकल डिग्री इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल डिग्री. ओके, सो यहाँ पे 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल और फिजिकल डिग्री सेपरेट करके लगाया गया है वाइंडिंग को. एंड स्टेटर प्रोड्यूसेस AC वोल्टेज आउटपुट ऑफ कोर्स, राइट. एंड इन केस ऑफ रोटर, सो रोटर जो है उसमें वाउंड फील्ड होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स होती हैं. एंड you need an exciter in order to excite the rotor, right? So you will need this exciter or an external, you can also call it an external DC power source. Okay, so you will need external DC power source in order to run the rotor. Okay, now how it will work? So the rotor field वाइंडिंग जो होती है उसको एक्साइटर मतलब डीसी पावर सोर्स से पावर दिया जाता है. अब ये पावर जो दिया उससे रोटर वाइंडिंग जो है वो एक्साइट हो गई. ठीक है, और जब विंड टर्बाइन की ब्लेड्स जो है, मतलब ये जो हमारी विंड टर्बाइन की ब्लेड्स हैं, जब वो रोटेट करेगी, नाउ विंड टर्बाइन की जो ब्लेड्स हैं जब वो रोटेट करेगी, it will turn the shaft, this shaft. Okay, it will turn this shaft, and when it will turn this shaft, जो रोटर के पोल्स है वो आल्सो रोटेट करेंगे. ठीक है, रोटर के पोल्स रोटेट करेंगे और पोल्स जो है वो ऑलरेडी एक्साइट किए गए हैं इस एक्सटर्नल DC पावर सोर्स से. ठीक है, अब जब स्टेटर की जो कॉइल्स है वो इस रोटर के रोटेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, रोटेट होगा, उसको कट करेगी. और बिकॉज ऑफ दैट थिंग EMF विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट. Faraday's law of electromagnetic force, EMF जनरेशन. सो उससे EMF इंड्यूस होगा कॉइल में, और ये जो EMF है वो जो मतलब जो ये हमारा जो पावर जनरेट हुआ वो कहाँ जाएगा? पहले जाएगा रेक्टिफायर में,
AC DC कंट्रोलर में, उसके बाद वो जाएगा इन्वर्टर में। जो डीसी पावर डीसी आउटपुट मिलेगा हमको रेक्टिफायर से, वो जाएगा इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो ट्रांसफार्मर से होके ग्रिड में जाएगा। ओके, बिकॉज जो हमको जो यहाँ पे आउटपुट मिला था, यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहा था, दैट वाज नॉट very stable output. Okay, it was variable AC, so we need to convert into fixed AC. So we took these two stages, converted it, and then send it to grid. Got it? Now let's discuss some of the advantages and disadvantages of this one. So active reactive power flow जो है उसको पावर कन्वर्टर से ही कंट्रोल किया जाता है. वी हैव सीन दिस वन बिफोर. Power factor control is very easy, again because of the power converter provided. Then constant voltage, constant frequency operation can be obtained with variable speed. Right, now discuss the disadvantages of it. इसका इस सिस्टम का मैकेनिकल बैलेंसिंग जो है वो डिफिकल्ट है. वाई? बिकॉज ऑफ एक्साइटर. बिकॉज वी आर including this exciter thing, and we are adding an additional DC source, and because of this we are getting lot of complexities and lot of issues about that. So first among them is सिस्टम का बैलेंसिंग जो है, मैकेनिकल बैलेंसिंग, वो डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, because in most of the cases we see symmetrical things, but exciter does not add up to that thing. So that is the major disadvantage. Another thing, because we are providing external DC source, उसका कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है. ओके, एंड इसका जो रेगुलर मेंटेनेंस है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड. नाउ डिस्कसिंग we will be discussing permanent magnet synchronous generator, PMSGs. यहाँ पे आप देख सकते हो PMSG. there is a wind turbine, blades, shaft. Here is the permanent magnet synchronous generator. Then again the power converter unit, transformer and grid. Okay, अब इसमें भी जो स्टेटर जो होता है इट हैज़ द सेम थिंग, सेम एज वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर्स. 3 फेज होता है और आर्मेचर वाइंडिंग है, उसको माउंट किया गया है स्टेटर की कोर पे. ओके, एंड अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू, वेयर इज इट गोइंग? ग्रिड सप्लाई. राइट, नाउ कमिंग टू रोटर. तो इसके नाम में ही परमानेंट मैग्नेट है. सो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे. इट इज़ परमानेंट. रोटर में आपको क्या यूज़ होता हुआ नज़र आएगा? परमानेंट मैग्नेट्स. रोटर की सरफेस पे माउंट किए गए होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स. ओके, नाउ जो पावर कन्वर्टर यूनिट जो होता है, कौन सा? दिस वन, लेट मी पॉइंट आउट फॉर यू. this power controller unit, power converter unit, it allows permanent magnet synchronous generator wind power plant to operate at different speeds and frequencies, which was the same in case of wound rotor synchronous generator or doubly fed induction generator. Okay, so always remember ये जो आपको वेरिएबल स्पीड मिलती है, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन जो मिलता है, it is because of power controller unit. Okay, so what it does, rectifier converts variable frequency and variable AC voltage amplitude. So what it does, rectifier converts variable frequency and variable amplitude AC voltage output of generator into DC voltage output. Okay, at variable level.
और साथ साथ में इट कैन ऑल्सो वर्क एज चार्ज कंट्रोलर. Okay, and then this inverter, this inverter, what it does, it converts DC into AC voltage at grid frequency voltage level. And at what frequency grid operates? Grid operates either 50 hertz or 60 hertz. In India we are using 50 hertz. There are some American countries, European countries who are using 60 hertz. Okay, and also uh, I don't think I need to mention it, but I will yet mention it that power flow control जो है power active और reactive power का, it is controlled by power converter. Now discussing about how it works. So जब भी रोटर की ब्लेड्स रोटेट होंगी, ओके, blades will rotate, and because of that shaft will rotate. Now when this shaft will rotate, जो परमानेंट मैग्नेट्स जो लगाए गए हैं with rotor winding, okay, those magnets will produce magnetic field, and uh, it will produce magnetic field, and then the three-phase stator coil will cut the rotating magnetic field and the EMF will be generated. Understood? We are using the same principle. We are using Faraday's law in both WRSG and PMSG. We are just toggling the operation way a little, but we are using the same concept. Okay, now rectifier inverter assembly converts variable voltage variable frequency output of synchronous generator into fixed frequency and fixed voltage output जो यूटिलिटी ग्रिड में रिक्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, नाउ कमिंग टू advantages. So firstly, what do you see? It does not require any exciter or any outside DC source, and by only by doing that resolving a lot of problems which occurred in WRSG, right? Variable speed operation मिलता है आपको, which you will get if you have this power converter unit. Okay, the another major advantages is reduction in size because कोई आपको exciter नहीं मिल रहा है, ठीक है. So size जो है it will be reduced and efficiency will be very high. Then power converter regulates voltage and active reactive power flow, which we have seen in all three of them. और power factor control भी power controller unit ही कर लेता है. Coming towards the disadvantages, structure dynamics जो है वो ज़्यादा complicated होते हैं. Another major drawback of this system is cost. जब भी आपको दिखेगा कि परमानेंट मैग्नेट्स जो है किसी सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस सिस्टम का कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ज़्यादा ही मिलेगा बिकॉज परमानेंट मैग्नेट्स आर वेरी कॉस्टली वेरी एक्सपेंसिव डिवाइसेस. ओके, साथ साथ में कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको होगी, टेम्परेचर को विद इन टू कीप टेम्परेचर इन चेक विद इन इट्स लिमिट्स you will require cooling system. Okay, so we will keep it till here. I encourage you students to go through the comparison between horizontal and vertical axis wind turbines, and we have discussed both the topics in the class, so it shall not be difficult for you guys to um, find out the difference between that, and also difference between fixed speed wind turbines and variable speed wind turbines. Again, we have discussed both of them in class, so it shall not be a troublesome for you guys to
go through that. And from the next lecture we will be moving towards solar energy and solar power plants. So the part of wind energy in our chapter will end here. So I hope to see you all in the next lecture. Thank you for your time. I'll be seeing you in the next lecture. Thank you. See you all.